हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालंकार। आई एम अनुज पवार। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है गेट एग्ज़ाम के लिए। हमने ये भी देखा था कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को ये किस तरह बेनिफिशियल रहेगा टू अपीयर फॉर दिस गेट एग्जामिनेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने उसके रिगार्डिंग स्कोर वैलिडिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कुछ एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग किस तरह ये गेट एग्ज़ाम इन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल रहेगा, ये हमने देखा था। अभी आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन रिमेनिंग 2 मंथ्स, जो कि आपका दिसंबर एंड जनवरी, ये 2 मंथ्स का जो टाइम ड्यूरेशन है, इन 2 मंथ्स में कौन से सब्जेक्ट्स को आपको प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट in least time you can score the maximum. So we'll start with the session. Here we have to decide how to prepare in the remaining time. So as we know that today we are starting with the December, so it is the first week of December and your examination will be on the first week of February if there is no delay. So hardly you have a month of December and the January, it is total 2 months of time. So in these 2 months, how you can plan or how the third year student can think कि गेट एग्जामिनेशन को किस तरह क्रैक करते हैं. So as the general scorecard, if you'll observe from the last 5 to 6 years, the gate score or the cracking examination marks is varying from 30 to 35 marks. So I am taking the average one, that is for the open category. So rest others are lying below that one. So if you'll see that if I have to score 30 to 35 marks in these 2 months, how I can select the subjects and how I can prepare for it. So those bits we'll discuss now here. So if you'll see that I have segregated only 8 subjects. So if you'll see here, I have first taken as a aptitude, second as a maths, third as a environmental engineering one, the fourth one as a geotechnical engineering one, fifth one is transportation engineering one, sixth one is surveying, seventh one is fluid mechanics and applied hydraulics, and eighth one is engineering mechanics and strength of material. अभी ये सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स है. अभी इसमें से भी लाइनअप किस तरह रखना है, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट्स में कौन सा पढ़ूं. एज यू आर अवेयर दैट इन सेमेस्टर फिफ्थ, in this current semester you have learned engineering, environmental engineering one, second you have learned the geotechnical engineering one, and you have also learned the transportation engineering one. So these 3 subjects, EE1, GT1 and transportation 1, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं. सो व्हाट यू कैन डू, जैसे कि टोटल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में E1 का वेटेज है 4 to 5 मार्क्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग 1 का वेटेज है 6 to 7 मार्क्स एंड ट्रांसपोर्टेशन 1 का वेटेज है 4 मार्क्स. सो मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहना चाहिए कि ई, ट्रांसपोर्टेशन एंड जीटी को मैं किस तरह कवर कर सकता हूँ. सो ये आपका फर्स्ट बिट रहना चाहिए. सो दैट इज अ पार्ट ए, जो कि आपका करंट सेमेस्टर में जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसको मैं किस तरह यूज कर सकता हूँ. पार्ट बी, नाउ आई विल टारगेट विथ सम huge subjects जैसे कि aptitude having the weightage of 14 to 15 marks, and same for the maths, it is weightage for the 14 to 15 marks. So as aptitude, if you will see that most of the students are going to appear for the placements, so by default they are preparing for the aptitude, so it will be helpful for them. So as per my knowledge, this level you can attend. सो फॉर विच ऐसे कोई अलग से प्रिपरेशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, बट जितने नॉर्मल नोट्स है या कुछ वीडियोस है जैसे कि आपको इस चैनल पे भी हमारे सर ने अपलोड किए हुए मिल जाएंगे, वो आप देखो. कोई एप्टीट्यूड का बुक रहेगा आपके पास, जैसे कि RS अग्रवाल का बुक रहता है, वो आप प्रेफर करो. दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट. रिगार्डिंग द मैथ्स, you learn M1, M2, M3, M4, but if you'll observe that whole syllabus is not in the maths. So you just segregate that कि which part is typically asked in the gate examination. जैसे कि मैट्रिसेस पे एक ऊपर प्रॉब्लम रहता है, लीनियर अलजेब्रा पे ऊपर एक प्रॉब्लम रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम रहता है. सो सेग्रीगेट दोज थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर द मैथ्स. सो ये आपका सेकेंड बीट रहेगा. तो सेकेंड बीट में हमें टारगेट करना है एप्टीट्यूड एंड मैथ्स. तो ये 2 सब्जेक्ट्स को हमें टारगेट करना है इन सेकेंड सेक्शन.
नाउ थर्ड विल बी योर सेक्शन सी. तो इस सेक्शन सी में हम क्या करेंगे, द रिमेनिंग बिट जैसे कि सर्वेइंग, एफएम एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सो. इसमें से आई विल प्रेफर कि आप फर्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स को प्रायोरिटी दे, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट आपका 8 to 10 मार्क्स का है. सो इन दैट फ्लूइड मैकेनिक्स देयर विल बी FM1, FM2 and applied hydraulics. In this also, if you'll go with the part called as a open channel, so this is a very important bit. So from the open channel there is always 3 to 4 marks question will be asked. So first, when you are reading for the fluid mechanics, first target this bit called as open channel. Later on you can read all the things from the fluid mechanics. The next bit you can go with the surveying. So surveying has a weightage of 4 to 5 marks. In this also, if you will observe since from the last 3 to 4 years, even though there are 8 to 10 modules are there, but the question are targeted from some typical modules, for example traversing, differential leveling, trigonometric leveling and the photogrammetry. So these are the topics that you can go with that surveying. And the last and not least one is engineering mechanics and strength of material. So the one who is good with the structures, they can think of it that they can appear for the engineering mechanics and so on. So this is the third section, that is C, in which we are targeting for the FM and AH. The second one is your surveying. Third one is your engineering mechanics and strength of material. So if you will observe here the marks wise, engineering mechanics and SOM, engineering mechanics is for 2 marks and SOM is for 6 marks. So total here it is as 8 marks. So E1 is comes with the, I am taking with the least marks, 4 marks. GT comes with the 6 marks, transportation coming with the 4 marks. So from section A you can score up to the 14 marks. From the section B, that is aptitude and maths. So aptitude is for 14 to 15 marks, math is for 14 to 15 marks. So it is almost 28 marks. Here you can score with that. And the last one is fluid, survey and mechanics and SOM. So fluid is for 8 marks, surveying for 4 marks and SOM and mechanics is for 8 marks. So it is also a 20 marks. So if you will take the whole section of this one, so it is almost 20, 48, 58 and 62. So it is covering almost 60 marks of your study in this one. So till 60 marks you have already learned till the semester 5th, and remaining 14 marks the study you will be doing in the next semester, since from the semester 6, 7 and 8. So from the 40, our target is to at least score 40 to 45, especially the third year students. So how you can plan those things? So if in our hand there are 2 months, so you can plan these 3 subjects for next 20 days, these 2 subjects for next 20 days and these 2 subjects for next 10 to 15 days. So like that you can plan the things and make sure that when you are reading those subjects and studying that, मेक श्योर दैट कि आप उसके ऊपर के MCQs हमेशा लगाते रहो, देन एंड देन ओनली इट विल बी यूजफुल, अदरवाइज कुछ मीनिंग नहीं रहेगा. सो विद दिस वन आई विल एंड अप विद द सेशन एंड will definitely crack this examination. So it is a special opportunity for the third year students, as they can analyze or they can appear in the third year only, and they can analyze themselves by studying that कि मुझे कितना आता है और मुझे कितना पढ़ने की ज़रूरत है. So here, if you like this video, you can like, you can subscribe, and for more updates just click on that bell icon, and we'll move on and we'll see in the next lecture especially how to target with the one by one subjects. Thank you.